Hello guys, welcome to the series. In this video we'll be just giving a very short introduction of the chapter Force and Motion, which is the second chapter of the new physics book of grade 11. Before we really get into the chapter, I think it's important that we understand what the chapter is really about. Uh, Normally, you guys have studied kinematics in your earlier classes, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल वी डिस्कस motion but only with, for example, quantities like what's the speed or the velocity or what's the distance covered or how much distance is covered, for example, given a certain speed and time. In force, we simply discuss force is simply an action which really alters the direction or the velocity of an object. So हमारे पास for example कोई object है which is at rest and we want to move it, so we will apply force on it, and that will cause it to move in the direction of the force. Or if something is actually moving in the very first place, कोई चीज़ already move कर रही है पर हम उसको रोकना चाहते हैं, तो even then we will try to put a force in the opposite direction to actually stop it. Or something is actually moving, and instead of just stopping it, we want to change the direction of it. So for example, वो इस direction में जा रहा था and you want to change the direction, so even in that case the action which is required will be the force. So it's important कि हम इन दोनों concepts को relate करें, kinematics को और force को. और इस चैप्टर का मेनली जो मकसद है वो यही है कि हम मोशन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स को स्टडी करें. सिर्फ मोशन को स्टडी ना करें, सिर्फ फोर्स को ना पढ़ें, बल्कि ये एक्चुअली देखें कि किस तरह से फोर्स एंड मोशन एक्चुअली वर्क टुगेदर. सो हम जिस भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को पढ़ेंगे वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स पढ़े होंगे. फॉर एग्जांपल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी. फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है इन लेट्स से अ बॉल, और वो एक इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में नीचे गिर रहा है, तो ये मोशन तो है हमारे पास, नीचे गिर रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स. तो हम इसको रिलेट करेंगे फोर्स को टू other physical quantities like distance or the speed or how much time it takes. So I hope कि हम इसको आगे further deeply explore कर सकें कि how do these concepts go well together. In later chapters we might also explore कि हम सिर्फ linear motion को ना देखें बल्कि और further types के motion को भी देखें under influence of force. So thank you so much. We'll meet in the next video.